Let me check, guys. Internet is working or not? Yes, it is working. Fine. तो अब लोग आ जाते हैं डेटा टाइप्स में, गाइस. जावास्क्रिप्ट हैज़ 8 डेटा टाइप्स. सो पहला है स्ट्रिंग, नंबर, बाइट, बाय बिग इंट, boolean, undefined, null, symbol, object. So these are the data types javascript has. कुछ खा भी लेना, मैं खाया नहीं है. ओके फाइन. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे. ये वेरिएबल्स हम लोग को पता चला गया है. लेट्स से यू डिफाइन करते हैं, और booleans, string and const has a key value pair data type also and list type data type also. and const इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, डेट ऑब्जेक्ट. इस तरह से डेट ऑब्जेक्ट बना है, एड ऑब्जेक्ट एंड object. Concept of data types in programming. Data types is an important concept to be able to operate and variables. It is important to know the something about the types. Without data types and computer cannot safely solve. So let x equal to 16 plus bulbo. अब ये क्या आंसर प्रोवाइड करेगा हम लोगों को, गाइस? कॉन्केटिनेट करेगा, राइट? वो स्ट्रिंग के टाइप डेटा रहेंगे. हाँ, लेट मी ट्राई इटसेल्फ. तो हम लोग आते हैं यहाँ. इट्स वर्किंग फाइन. कॉपी कर लिए हैं. अब इसको डिलीट करते हैं. Ctrl+F. ठीक है. WQ से बैक आके इसको करते हैं रन. 16 बोल्बो ये काम कर रहा है. कॉन्केटिनेट कर दिया है सिंपली. अब इसका क्या करेगा जावास्क्रिप्ट? तो 20 प्लस बोल्बो, ठीक है. बोल्बो 164. अब सी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि पहले अगर रहा, स्ट्रिंग से पहले रहा तो वो पहले जोड़ेगा दो इंटीजर को, बट स्ट्रिंग के बाद रहा तो वो कॉन्केटिनेट करेगा. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग इसको. चलिए तो इसको प्रैक्टिस कर ही लेते हैं एक बार. इस बंदा को कॉपी करते हैं, एंटर. यहाँ पर Ctrl+V, बैक. Oh, it's fine, right? अब JavaScript types of are dynamic. Let x equals 5 and x equals John as x is the string. अब क्या ये डिक्लेयर होगा? ठीक है. अब इसको करते रन. हम लोग क्या स्ट्रिंग वाला आंसर आएगा? यस, स्ट्रिंग वाला आंसर आएगा. ठीक है. JavaScript dynamic types, it means that some variables can be
used to hold different data types. JavaScript string सिंगल क्वाट्स, स्ट्रिंग भी हम लोग डबल क्वाट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं और सिंगल क्वाट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं JavaScript. Let me get one example of this guy. Just copy this whole code from here and the back. And अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं. कॉपी एंड पेस्ट. line paste after the current line. चलो ठीक है, कॉपी करते हैं. कॉपी करने का क्या बताया है ये लोग, डबल डी तो नहीं, अभी नहीं, डबल वाई. अब इसको आके पेस्ट करते हैं. पेस्ट के लिए पी. अब पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, पता चल गया पेस्ट कैसे होता है, कॉपी कैसे होता है. ओके, जैसे भी, और इसको करते हैं बैक आने के लिए रन. हम लोग करेंगे रिफ्रेश यहाँ जाकर. बट वी आर गेटिंग, वी विल गेट आंसर और नॉट, आई थिंक नॉट. इट विल बी, बट क्यों? हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आई डी यूज़ किए हैं डॉट इनर HTML, वो दिखाए गए. आंसर 1 में क्या है हम लोगों का, इट इज़ ऑल राइट. सो 2 में क्या है, ब्रेक यूज़ करके हम लोग इट इज़ कॉल्ड जॉनी. एंड ऑल्सो 3 में हम लोगों का इज़ जॉनी. सो हम लोगों का ही इज़ कॉल्ड जॉनी. ये तो हो ही रहा है. अब नेक्स्ट यू लर्न मोर अबाउट द स्ट्रिंग्स, जावास्क्रिप्ट, नंबर्स. Pretty values, undefined and types of object, arrays, begin. So let's नंबर बनाते हैं. स्ट्रिंग्स हो गया हम लोगों का. क्या क्या था, स्ट्रिंग्स हो गया, नंबर पे आता है. so, इन दोनों को कॉपी करते हैं. नोटेशन, पे किया W आकर बैक. अब हम लोग इसको करेंगे रिफ्रेश. हम लोग आंसर हो गया, वो मिल रहा है. अब स्टोर द डेसिमल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन बी रिटन विदाउट डेसिमल. विथ और विदाउट डेसिमल हम लोग को नंबर मिल जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर can be written as a scientific exponential notations. So ये scientific exponential notation है. e to power 5 and e to power -5. ये एक्स्ट्रा मतलब स्मॉल नंबर, स्पेसिफिक छोटा नंबर हो, ये बड़ा नंबर बोल सकते हैं इसको. तो हम लोग कुछ उसको कॉपी करके एक बार प्रिंट कर लेते हैं. बैक देंगे. अब हम लोग देख लिए हैं कि
यहाँ पर इस तरह से छोटा नंबर बड़ा नंबर को हम लोग जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या यहाँ पर भी एडिटर में सीख लिए, कॉपी पेस्ट सीख लिए, कट सीख लिए, राइट। लास्ट लाइन ऑफ द फाइल, तो ये डायरेक्ट जी से हम लोग लास्ट लाइन ऑफ द फाइल में चले जाएंगे। बहुत काम का था गाइस ये वाला ट्यूटोरियल। स्टिल हम लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये एडिटर में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है इस दौरान। अब हम आई डोंट नो सो क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब जावास्क्रिप्ट बिगिन आते हैं। बिगिन में बड़ा डेटा है गाइस, यहाँ आके तो कॉपी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेव करेंगे और हम लोगों को आंसर आ जाएगा। सो ये बिग डेटा का, बिग डेटा नहीं, बिग इंट टाइप ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल बोल सकते हैं, डेटा टाइप है। लार्ज नंबर ऑफ डेटा हम लोग अमाउंट ऑफ मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर बिग इंट यूज़ करके। बूलियंस पता है हम लोगों को बहुत अच्छे से। बूलियंस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। कॉपी भी बैक करते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको रिफ्रेश, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स क्यों आया इसका हम लोग जांचते हैं थोड़ा सा। तो x 5 है, y 5 है एंड z 5 6 है। तो x इक्वल टू y, तो ये क्या हो रहा है, x इक्वल टू y 5 बराबर हो गया, ठीक है। ब्रेक लेकर नीचे आया करता हम लोगों का x इक्वल टू z, नहीं z नहीं है तो फॉल्स होगा, क्योंकि z का वैल्यू 6 है और x का वैल्यू 5 है। फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, WP से बाहर आएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। तो डिलीट के लिए हम लोग x यूज़ कर रहे हैं, रिप्लेस द करंट कैरेक्टर, ओके। switch to character, delete the current line, delete the current line from the character of the end of the line, dz, delete from the current line to the end of line, okay। current line से end of line तक हम लोग यहाँ पर इसको करते डिलीट, हो गया है हम लोग का बूलियंस। अब आरे टाइप ऑफ डेटा हम लोग देखते थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि पहले ही प्रैक्टिस कर चुका है लेकिन फिर से प्रैक्टिस कर लेता है। अरे कॉन्स्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हम लोग यूज़ करें जी 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 जी, let me
अभी इसको यहाँ से ये डीजी काम क्यों नहीं कर रहा मेरा? डीजी नॉर्मल डीजी लिखना है। डीजी काम नहीं कर रहा मेरा, बट एनीवे गाइस लेटर वी विल बिल्ड डीजी चेक दिस थिंग्स। शार्प आंसर आ रहा है, क्यों शार्प आंसर आ रहा है? मैं चले जाते हैं प्रोग्राम में, तो लोग इसको प्रिंट करें कार ऑफ जीरो, इंडेक्स जीरो पे कौन सा है? शार्प, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर रिटर्न नेम वैल्यू पेयर्स सेपरेट बाय कॉमा। सो ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा देखते हैं हम थोड़ा सा गाइस इसको। तो यहाँ पर हम लोग इस डिक्शनरी टाइप डेटा, मतलब डिक्शनरी पाइथन में होता है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप ही डेटा बोलेंगे इसको। जैसे टैब डब्ल्यू किया और यहाँ आकर रन करते हैं इसको। रिजॉल्ट एंड फाइन। और जॉन इज 50 ईयर्स ओल्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर, हम लोग वो भी देख लेते हैं। 50 है। तो पर्सन नेम क्या है? फर्स्ट नेम पर्सन डॉट नेम जॉन, एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो रहा है यहाँ पर। पर्सन डॉट एज 50 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। कुछ कम जहाज है, कॉपी नंबर। So what is here? We check with undefined car has not, the value is undefined, type is undefined। यहाँ पर कार में कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। और वैल्यू इज अनडिफाइंड, टाइप इज आल्सो अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे इस वेरिएबल को, और इसको हम लोग करेंगे ट्राई टू प्रिंट, ओके। हो गया, तो करेंगे yes and try to release this type of string, so it is running, okay fine। अब थोड़ा सा हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो जाएंगे, उससे पहले फंक्शंस पे मूव करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग वी एडिटर के बारे में देख लेते हैं। और टू जंप लाइन्स विल डायरेक्ट यू एट द लास्ट लाइन ऑफ द फाइल, will direct you to your last position of the file, okay।
प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, भाई भाई। और हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। स्टार्ट एंड एंड द लाइन ऑफ द कमांड, bring at the start of the current line, bring at the start of the current line, bring at the end of the current line, delete till start of the line, delete till end of the line. Okay, so $5 and $. अभी हम लोग चलते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के जावास्क्रिप्ट JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. JavaScript function execute when something invokes it, call it. तो मस्त मज़ा आने वाला है इस ये वाला सेशन में, JavaScript वाले सेशन में। सो 1 मिनट में चेक कर लेते मेरा वॉइस प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। जस्ट थोड़ा सा टाइम देना गाइस। तो जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार इस प्रोग्राम को देखता हूँ। तो ये फंक्शन है, इसको कॉपी करते हैं थोड़ा सा। इस फंक्शन को ही पढ़ना है हम लोगों को। साउंड आ नहीं रहा है यार, ये अब क्या। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो। तो ये तो काम कर रहा है हम लोगों का फंक्शन है। फंक्शन हम लोगों का है क्या, वो एक बार चेक कर लेते हैं। दो पैरामीटर पास किए हम लोग ये फंक्शन से, P1 और P2, और उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद, ये उस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर पैरामीटर पास किए हैं 4 और 3, मतलब P का जगह पे 4 है और P2 के पास 3 है, और रिजल्ट ये वाला रिटर्न करेगा हम लोगों का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो फाइन था। अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसको रिप्लेस करते, तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या क्लिक करना था, इस जगह पे रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना था आर और इसको देते हैं हम लोग माइनस। सो इट्स फाइन, ये रिप्लेस हो चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ जस्ट इस फंक्शन का परसेंट चेंज कर देंगे और यहाँ पर 1 आ गया, इसे फाइन है। हम लोग माइनस करने से 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटेक्स, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शंस कीवर्ड फॉलोड बाय अ नेम फॉलोड बाय अ पैरामीटर पैरेंथेसिस
Function name can contain letters, digit, underscore, and dollar signs. Some rules as variables may include parameters name separated by commas, parameter and parameter 2. The code is to be executed and the functions is placed inside curly brackets. तो हम लोग पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं और उसका फंक्शन का नाम एंड फंक्शंस लिख कर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन का नाम. नहीं VS कोड में नहीं होता है. मतलब क्या होता है प्रॉब्लम कि VS का यहाँ पर मेरा लिनक्स एक्चुअली मैं हम यहाँ पर लिनक्स के साथ करना चाहते हैं, प्रैक्टिस हो मेरा, और बस इसीलिए कर रहे हैं. VI एडिटर में ज़्यादातर काम होता है सर्वर्स वगैरह पे, तो जब भी सर्वर्स पे हम लोग काम करते हैं तो हम लोग VI एडिटर ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम VI एडिटर यूज़ कर रहे हैं लिनक्स का. और मेरा मेन मुद्दा यही है कि प्रैक्टिस के साथ साथ ये लिनक्स का जो VI एडिटर है, लिनक्स इन्वायरमेंट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा जान सके, उसको ज़्यादा कमांड होता है, क्योंकि सर्वर पे काम करने के लिए हम लोगों को ज़्यादातर ये आता है, लिनक्स यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, और कोई बात नहीं. तो इसको रिफ्रेश कर लेते एक बार गाइस. तो रावण कौन है? ओके फाइन गाइस, ये तुम्हारा चैनल है राइट? ओके, मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ. ओके फाइन. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट. फंक्शंस पैरामीटर्स आर mission inside the parameters and the functions defined. The function argument are values received by the functions when it invokes inside the function. The argument, the parenthesis behaves a local variable. Function invocation. The code inside the function will execute when something invokes and calls the functions. When the event occurs when user clicks on the button, when it's invoked, call the JavaScript code and automatically self-invoke. You will be learn a lot more about functions invocations later in the tutorial. Functions return. Return क्या है? When the JavaScript reaches the return statements, the following will stop executing. It is the functions was invoked from the JavaScript, and the statement JavaScript will be written and execute the code after the invoking statement. Functions after the compute and return value. The return value is written in the back of the caller. Let X and function same function parameter पास किए थे. So we have to practice this one. So सेम ही प्रैक्टिस किए थे हम लोग इससे पहले, सेम ही तो था, तो हम इसको ना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. Why functions? The functions are the diffuse code, and you can write the code that can you use many times. You can use the same code with different arguments and produce different result. मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ. The operators, the functions to calculate parameter. So ये वाला प्रोग्राम हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते गाइस. सो हम लोग यहाँ पर जस्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं. सो प्रोग्राम के साथ साथ थोड़ा सा कंसेप्टली भी हम लोग का रिवीजन हो जाएगा. अभी हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन है 2 सेल्सियस नाम का फंक्शन है. रिटर्न क्या कर रहा है 5/9.
इंटू -5 32 वैल्यू क्या है हम लोग का 77 डाले हम लोग को सेल्सियस में डेमन। अगर हम लोग इसको बैक आकर रन करें 25 सेंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ पर उसका फार्मूला होता है -9 इंटू फ़ारेनहाइट -72। सो गाइस अभी नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्शन द फंक्शन विदाउट रिटर्न फंक्शन एंड नॉट द फंक्शन। तो हम लोग रिटर्न करके किए थे और विदाउट रिटर्निंग हम लोग इसको देखते हैं। सो अभी क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और वैल्यू ऐप में डेटा हम लोग पास ही नहीं किए। ठीक है, ऐप में डेटा हम लोग पास ही नहीं किए, तो हम लोग का आंसर क्या आना है। सेम चीज़ है, और यहाँ पर हम लोग दैट्स इट, यही रहना है। अब बैक आके इसको करना है रिफ्रेश, हम लोगों को क्या आंसर मिलता है, फिर यही वाला हम लोगों को सेल्सियस रिटर्न हो जाएगा। अब नोट क्या है, फंक्शंस यूज वर्सेस वेरिएबल। So functions can use the same way as you are variables. All the types of formula assignments and calculations. Let x equals to Celsius and x equal to temperature is x Celsius. Sound to come back. So guys, so next हम लोग चलते हैं ये वाला प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी करके सारे को Ctrl+F बैक आके इसको करते रन। द टेम्परेचर इज 25 सेल्सियस डिग्री। अभी हम लोग का प्रोग्राम पढ़ते हैं। प्रोग्राम में हम लोगों का क्या है, तो टेक्स्ट प्लेस वेरिएबल में हम लोगों का स्ट्रिंग प्लेस यहाँ पे सेल्सियस 77 का, और ये वाला फंक्शंस को यहाँ पर किया है सेल्सियस कितना है हम लोगों का फ़ारेनहाइट 32 ये वाला हम लोग का आंसर मिल रहा है 77 का। फ़ारेनहाइट कितना है ये। नेक्स्ट अब लोकल वेरिएबल पे आते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल होता है। तो ये वाला हम लोग क्या कर रहे थे तब से ग्लोबल वेरिएबल पर, लोकल वेरिएबल पे काम करते हैं इसको प्रोग्राम जावा फंक्शन का। तो लोकल वेरिएबल होता है वो फंक्शंस के अंदर में रहता है। ठीक है, उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और इसको हम लोग करते हैं डिलीट या सेव कर लिए। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आंसर क्या आ रहा है हम लोगों को, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, बोल तो क्या हम लोग पुट किए हैं तो लेट टेक्स्ट विल आउटसाइड टाइप ऑफ प्रकार में फंक्शंस। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होना चाहिए गाइस, आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक माइट भी इसका आउटसाइड इनसाइड स्ट्रिंग आउटसाइड स्ट्रिंग
टेक्स्ट में गेट ब्राउज़र इशू नहीं हो रहा है यहाँ। एंड गेट एस्टिमेट टेक्स्ट में स्ट्रिंग वैल्यू कितना है, वैल्यू टाइप ऑफ वोल्वो अनडिफाइंड है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, so ये वाला प्रोग्राम हम लोग रन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग हियर गाइस। अब हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं, कंसोल में चेक करते हैं और हम लोगों का क्या आ रहा है, एनएसली टाइप। लाइन नंबर 2 गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो 1 दे रहा है। लाइन नंबर 2 में हम लोगों का एरर आया जा रहा है, यहीं पर हम लोगों का एरर आया जा रहा है, ठीक है। डेमो 1 है but thing is we are not specifying these things in our HTML फाइल में, ठीक है। आएगा आंसर है इसका, देखो अभी आपके पास मैं लाता हूँ यहाँ और यहाँ आके सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब आंसर हम लोगों का आ गया डेल। सो इस तरह करके हम लोग को रिजॉल्व करना होता है गाइस। और यू अंडू लास्ट नेम, ये सारा चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये एडिटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फाइन है। चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस हो गया हम लोगों का कंप्लीट। ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अ बिग गाइस। सो ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आके एक बार ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। हम लोगों ने ये सब पढ़ा है पहले भी, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं और फॉर द शार्प रिवीजन पर्पस हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एसिंक, HTML, DOM, एजेक्स, जेसन, इस सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। जेसन, जेस, एजेक्स, वेब APIs, ब्राउज़र, DOM, एसिंक, क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, ये सारा पढ़ेंगे वन बाय वन। सो ऑब्जेक्ट क्या है? सो गाइज अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब साउंड थोड़ा सा ठीक है साउंड ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आर द थिंग्स लाइक हाउस, कार्स, पीपल्स,
and animals or any other subjects. Here is the car is an example. So car is an object, car is a property, like car.name, flat, car.model 500, car.weight if 8.5 is, car.color white, methods, car.start, मतलब इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है. मेथड्स मीन्स behavior है, start, stripe, brake, stop. These are the behaviors of this car. Object has a properties and behaviors. Okay, object properties, it is a real life has properties, the weight and color, and these things. Object methods, real life has a methods like start, stop. Some behaviors has skip variables in the flats. Variables किस तरह declare करेंगे? How can we declare that properties? So we can car equals to flat, and how can we declare the behavior? Using function only. Okay, so declaring the, these are the what we are just object literals passing through that and how we can create a JavaScript objects. So object we can create like this, create an object. See, this is the what const object, person is a object here, and I'll just what I'll do, I'll copy this guy and copy this guy, and I'll come back, and I'll not work here. I'll back again, I'll go to that JS file and I'll just delete, Ctrl Shift F, and I'll back again and refresh. So we are seeing here we are not getting anything here. Why we are not getting anything? Because we just didn't give that demo word here, like index.html. So what we have to do, for the space what we can use here, see, for the giving one line of space, what we will be do here, we will directly start from the last line. No, just type G. So last line चला गया, अब इंटर करना है. We want to enter, so we can just one space, one line of space we needed. Just to replace and Z, undo, delete, by paste and delete, and bring, start the current line, bring the intermediate state, join the two line, and repeat the current line, swap two lines, no, forward, W, move one word forward. So let me check, guys, what player is that person. Just want to give one space, current line, no, oh, start typing on the new line after the current line. Okay, just I will put O. So using O we will get first line of space, and I'll back, and back to here. So still we are getting how we can use that O and the capital O. John, 50 years old. Okay, fine. So what is the our program? We didn't show. So our program is like, so our program says person name John is, person is 50 years old. Fine. So we already run this program, right? Using new keyword. So using the new keyword we can create an object. Using new keyword only we can create an object in JavaScript. What I'll be doing here, these are the fine. Copy and delete and Control W key. It's fine. Now what we will be check here,
the const person is the what, and person variable type of object. It has, we have created one object, okay, new, using new code you can object person dot first name and all, and document dot element dot demo and HTML person dot name is personalized. Fine. So what is the issue here? Nothing, same thing, but person is the object. We created a one object, okay, fine. So next person name for definite, and next object properties. So creating object, accessing array on PHP, dictionaries in Python, as table in C, as map in Java, as is in Ruby in Perl, and these are the fine object properties. Accessing object properties, you can access object properties in two ways. How can we access the object properties? Like we just give that variable name and property name, variable and property name. The person's last name, this is the accessing, and person of last name, like this we can also access. Okay, so creating an object persons of last name, like this we access the data, and persons dot last name is created by using dictionary, like this we can run object persons dot last name, like this we can access. Okay, fine guys, fine, I got. How can we guess to think about that? JavaScript object methods. So what is the method? Methods are nothing but these are the using function only we can define methods. Okay, so I'll just copy this full of program, full of script here, and simply input and back, and just I will run this program. What is the program is saying here? I'll check const person, created one object has the properties first name, last name, ID, full, and the functions, that full name functions return this first name plus equal to last name. We're going to write demo into person's full name. We just full name all the two properties are contained, first name and last name. Okay, noted. And now what is the scenario here? So in this example above, how we can, later we will be checking it. In this example above, this is the refers to the person's object, this name, first name and last name, the properties of person, and the name, the means and last name property of the person. JavaScript object are king. In the understand object, you understand JavaScript object are containers of for properties and methods. Properties are named values, methods are functions stored in properties. Properties can primitive values, functions, and even other objects. In the JavaScript, almost everything is an object. Objects are objects, maths are objects, functions are objects, dates are objects, arrays are objects, maps are objects, sets are objects. All are JavaScript those except primitives. Primitives are object. JavaScript is primitives, but what primitives means? Primitives means like string, number, boolean, null, undefined symbols. These are the primitives. Or otherwise, everything is object. Immutable means what? Immutable means primitive values are immutable. They are hard coded and cannot be changed. Okay, so primitives cannot change. JavaScript objects are mutable. So once JavaScript objects are, we can create it. Then objects are, we can change. So it is mutable. Let's run this program, guys, and what I'll be just copy this person till here, and
and what I'll check here, whole program how can we delete, delete the current director of index directory. Okay, fine. So end of the line बोल रहा है, file dz, end of the file na dz coming, this is not working here guys. So I'll be back to again, and right now I'll just check one by one how it's working and why it's not working, these all the things. So let me check the program first again. So here person is object, created an object person called name, and person has these properties, and const is the person created a copy, create a copy. Suppose create x is the person, the person, and x dot age, x dot we are accessing this properties, age equal to 10. So we just change the name, age here, age value 5. Next to dual object properties and object methods. I will check in this program. There is a, it's almost not 1 hour. In JavaScript objects properties is an object is an unordered collection of properties. Properties are the most important part of the JavaScript object. Properties can be changed, added, delete, and some are read only. Accessing JavaScript properties, syntax about fixing properties and the objectives. So how we can accessing the properties using this person dot age, we can access. This is our object name and this is the properties. So it's accessed. Let age the person, this is the object name of properties, age when we declare with new keyword. And expressions, using expressions we can also access. Let me run this program first. Let me learn one again. Okay, fine. Let me go with this program, guys. And so this is fine, and I'll just get to know about this program. So person is an object name and how we can access those person.
So using this person dot first name we access, and person dot as we access here like 50. Here using a new keyword we just run this program. We run this program using this only. You can also same. We are accessing the data and we'll just check the program. Fine. Person age and all, first name John and person age 50. Okay, fine. There is still here. I'm done. I'm clear, no doubt here is that. Adding new properties. How can we add? Yes. I and run this program, guys. Yes, Johnny English is here. Fine. So how we can add? We should know that about, and how we can delete. So we just use this guy. Okay. और यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा? ओके, अब इंटर मानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक स्पेस, not using anywhere. I'll just back.
So let me check. So it is delete or what. If I want to access the age here, no, undo के लिए U, एज अब if I refresh, they will not get the answer, because why? That is X is deleted. If you want to console, go to the console, line number, unexpected token identifier is not there, so that's mean this. Okay guys, और अभी हम लोग क्या करेंगे, now what we will be do, nested object हम लोग देखेंगे, how we can check nested. It is very important guys. Oh. We can access and how can do all the work here. So let me check once again. Let me check with this guy, object.myCar. So my object myCar.car2 means this is the object name. Inside object has nested object, and this is the properties of nested it. What I will do, I will just let me as like this guy I will copy. Okay, this guy I will copy, E tipping हम लोग into Control Shift F, find. I'll delete this line, and I'll delete this line too, and how we can access car to BMW here. So using let me back here, version dot my cars dot car 2. Okay, fine. Let me run this guy. So we are having some issues, syntax error after the 16 line number.
कि हम लोग इसको बैक करते हैं, रन करते हैं. What is the problem? I'm still getting a problem. What is that? So my object is there, like some word is I meant by. So what's happened? Everything is fine, no? I just am using that persons. Oh, so in spelling mistake is there, guys. Okay. I have to put I. Again, person dot my cars dot car 2. Just now I will be access that in mistake. Still I am facing error, guys. What is the issue here? Just given the okay. So what is here? We didn't semicolon, and I'll get the answer. Persons dot my car is not undefined. Person. Family dot my cars dot. The problem is here. This guy. I will type R and C. Insert. Now I will be surely get the answer. Check. Fine. I'm getting the BMW here, guys. Oh. So how we can access inner? Same thing, using dot only. We have to replace of here my car of car 2. Okay, fine. And like this also we can access my cars of car 2. Fine. And just I'll run this program again. Let P1 P2 and here we can like this we can also define our
program, guys. So this is interesting new thing here. We just going to learn. And we'll just what I'll be doing here, I'll just refresh and we'll getting the ball. And what is happening here, let's see. So P1, we store the my car value inside the P1, and P2 has a card2 value. So we declared in for accessing the data of this object, my object of P1 and P2. Fine. So guys, thank you. Back to next video again in that methods, and again we'll learn more about this, guys. Lot of things we learn in the editor, and thanks. We'll back to again.